अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नाज़रीन अश तोय खुश आमदीद वनन पन्निस यथ उमूमी प्रोग्रामस मज यथ एजुकेशन मैटर्स छ नाव और अथ थीमस तहत करो इंशाअल्लाह ताला मुख्तलिफ इशून पे करो इस कत और यह तोय सनिस यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेजस पे आइसे तोय अवेलेबल। नाज़रीन आज अकिस अहम इशूस मुतल्लिक कत करें। जानन कि बुनियादी तालीम हज यम फैसिलिटीज तम वनकस तकरीबन हर जगह अवेलेबल और इंतजाम आमित कर इंसान हे बुनियादी तालीम वनकस हासिल कर वनकस जन स्टूडेंटन हज और पेरेंटन हज कोशिश रोजान सह कि अस गस मेरी तालीम हासिल गई और स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन जन सह गो बेहतर आसन और अत ज़िमनस मज तबका यह कर कि तम आउटसाइड J&K गसन पन तालीम हासिल करने खतर और यह तम बहसा वत चारान कि हेको बेहतर तालीम हासिल कर मेरी तालीम हासिल कर इसलिए सवाल पैदा सपदन कि क्या यह ज़रूरी सान खतर कि गो आउटसाइड J&K मेरी तालीम हासिल करने खतर यह जन आज थीम सह कि एजुकेशन मैटर्स मज जन थीम आज सह कि लर्निंग आउटसाइड J&K एकेडमिकली यह बेनिफिशियल किन एकेडमिकली यह ज़रूरी किन तालीमी हिसाब यह मुफीद किन ज़रूरी कर कह। बहरहाल यथ क्वेश्चनस पे अत इशूस पे डिस्कशन खतर रोशनी त्रावन खतर मे त्रेन मेहमान आज दावत दिसम बह दिम तुह मुख्तसर तारुफ यमन मेहमानन हुंद और यह तारुफ रटथी तर फिक्र कि यम अत सवालस पे बहस करने खतर सारे खुद बेहतरीन यानी कि हेकन यम पोजिशन पन बयान कर। गोडनिक यम जन सन मेहमान तम एजाज अहमद वानी साहब और यम PhD वनकस परस्यू कर कश्मीर यूनिवर्सिटी। हालांकि यम कश्मीर यूनिवर्सिटी PhD परस्यू कर मगर यमो पन BA ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी मज कोर्मुत और MA तमो दिल्ली यूनिवर्सिटी मज कोर्मुत पॉलिटिकल साइंस मज और कैंसस टाइमस यमो बहस उस्ताद तम कर्मज दिल्ली यूनिवर्सिटी मज। दोयम यम जन सन मेहमान तम यासिर बशीर और यमो BA पन मुकम्मल कोर्मुत दिल्ली यूनिवर्सिटी मज और MA वनकस कर दिल्ली यूनिवर्सिटी मज हिस्ट्री डिपार्टमेंटस मज। त्रेयम यम जन सन साथी अजकिस प्रोग्रामस मज स्पीकर यम जन तम समीर अहमद रथर साहब यमो BA कोर्मुत अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे और यम वनकस MA कर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मज और यह जन सब्जेक्ट सह सोशियोलॉजी। बहरहाल यम सन त्रे मेहमान इंशाअल्लाह ताला आजुक जन बहस रोज वारिया दिलचस्प। बुनियादी तौर प्रिस बह पन्न मेहमान 4 सवालात यम सह समझने कोशिश करो कि नेबर तालीम हासिल करने खतर गसन यह बेहतर सान खतर किन यह ज़रूरी कह। गोडनिक सवाल यह जन यह मुख्तसर करो उम्मीद कि दिन जवाब और मोहतरम एजाज सबस पे करो शुरुआत इन सवाल कि यह जन फैसलो गो एजाज सब कि तुम गो नेबर तालीम हासिल करने खतर यह नुआ तुम पाने फैसलो किन यह कोर बेस तुहद तरफ यह फैसलो और तम सात क्या उम्मीद यम सात तुह यम सात यह फैसलो गो चाहे तुहद तरफ गो या बेस तुहद बदल। मोहतरम एजाज सब जनाब मैं कोशिश पे कत करें कि उर्दू अंग्रेजी देयर आर नो बैरियर्स। Okay, I'll try to balance between English and Kashmiri. I'll try my best. Okay, fine. Okay, so in my case, it was entirely my own decision. I literally lobbied for it. Parents were definitely not, willing to let me go to Delhi back in, I'm talking about 2008, 2009. So at that point in time, not many people would go outside. And of course, this reluctance on the part of my parents would come from, the fear of far or rather distant areas. So if you fall ill, who would take care of you, so on and so forth. But I managed to convince them eventually. So definitely it was my own decision. Shukriya, thank you. And what were your expectations at that time? Well, right from the beginning, I've always been trying to be an academic. So
this was my only expectation then, and it's my only expectation now. So I've been consistent on this front. पन्नन कशरन नाजरीन खतर वन बह एजाज सब फरमान कि मे पे अम खतर वारिया तगोदो गर कर कोशिश कर कि बह गस नबर तालीम हासिल करने खतर और मोन शौक होस कि तालीम हिंदिस मैदानस मजी पक बह ब्रो मे बी जन पढ़नाउनुक जन शोब यह कर बह ब्रो कुन ज्वाइन या रिसर्चुक जन शोब यह कर बह ब्रो कुन. It's okay. Thank you very much for inviting for this very important discussion. Your question is a decision of studying outside J&K when it matlab me yem sat zan me pyu never gasun padne khadra, it was not purely my own decision. It was actually the decision of very close friends by their support, care and love कि मे हुक नेबर गसित कि यो जन मेन मेनिस डिसीजनस कर तिमो कुन हदस तान बूस्ट तो यम जन यम फ्रेंड्स somewhere of my age, somewhere very elder to me, और यमन मज के नफर मतलब यम जन academic process छु एमिक ओस यमन वारा हदस तान exposure. और coming to the question of expectations कि तोय कम जन expectations आसो एम साथ कि गोडनेथी का कि आउटसाइड J&K का इंसान तालीम हासिल करने गसन पन्निस पानस मन छी मतलब एक्सपेक्टेशन आसन कि नेबर हसा गो पढ़ने दोयम कि पत नेबर गसित कुन पर्टिकुलर इंस्टीट्यूटस मज पढ़न तो तम कि वजह से अगर तथ इंस्टीट्यूशनस ग्लोरियस पास्ट आस और तथ इंस्टीट्यूशन आउटपुट आस ठीक ठाक तो एक्सपेक्टेशन पे वारा ज्यादा मतलब एक्सपेक्टेशन वारा ज्यादा हुरान तो एक्सपेक्टेशन यी कि यम साथ नेबर गसो कि बेटर facilities मिलन तत in comparison the colleges of Kashmir Valley, that has better curriculum, better opportunities, और सारे खुद बोर्ड important चीज यम साथ मैं न्यू डिसीजन कि बगस वन नेबर पढ़ने कि it was कि ये तो तम साथ टर्मोइल चलन 2016 मज और एक्सपेक्टेशन यम रेगुलर मोड्स ऑफ क्लासेस. Okay, thanks. शुक्रिया. तो समीर सबस कैंसो फ्रेंडो ते बूस्ट अत मज कोरमुत पनन ते ओसमत अत मज कोशिश आपके बगस नेबर तालीम हासिल करने खातिर तो फाइनली न्यू एम डिसीजन. बहरहाल इसमें दोयम राउंड करो इस क्वेश्चनन हुंद तो तत मज छु बे एजाज सबस कुन करो इस गोडनेस रजू. एजाज सब तोय युस वइन डिसीजन न्यू तोय कुता छु बासन कि तुहस एस्पिरेशन या यु त एक्सपेक्ट ओसु कोरमुत तत मेले फुलफिलमेंट. Well, one can actually answer this question in many ways. So the first one is basically evaluating my objectives against the material benefits or the advancement, career advancement. अक्सर यम साथ इसका वो never you should never gumut variya time है. We always ask this question: what has he done now? What, or rather, what kind of a job is he doing right now? So we always evaluate this in terms of getting jobs and securing tenure and so on and so forth. But I'm not going to do that because I'm still, completing my PhD. I might take another 6 months to complete it. So therefore, I would like to evaluate it in two important ways. The way having an education outside the state has helped me. First, as an academic, as a researcher. So I would say I was introduced to academic world quite at the earliest stage, maybe, during the graduation and during the masters. So that's how they shape your academic, or rather give you earlier academic exposure, or rather culture. So that is one important way in which it, studying outside Jammu and Kashmir, and particularly at Delhi University, has helped me. Second important way in which it has helped me is basically as an individual. Studying at a place which is diverse, it is an different cosmic look.
So you have an opportunity to learn from different cultures. You're introduced to different kinds of ideas, different shades of opinions. So it's a place yetitoi panin ideas to test karam basically. You go to a particular university with your own sets of ideas. Some are parochial, some are not parochial, and this place offers you an opportunity to test those ideas. And I think in my case, DU has actually made me a good human being in in ethical terms. It has allowed me to look at things from different viewpoints. If we conclude, you say that you are satisfied, maybe it gave you more than that. Huh? I wouldn't be more happier than that. Okay, fine. इस तरह समीर साहब उसको ने मिस इमन ते प्रसोस हुआ सवाल के समीर साहब यम तो एक्सपेक्टेशन आस यम साथ तो नेबर गए चूंकि इंसान शुद अंदाज आसन के मिश उम्मीद है आसन तेली छ गसन बेकुन माहौलस मंज तो मगर व्हेन यू एंटर्ड दैट वेरी नाउ आफ्टर सो मेनी इयर्स तो आई क्या शुंकस बासन के यू आर सैटिस्फाइड विद योर डिसीजन दैट यू टुक एट दैट टाइम बिल्कुल युजन सैटिस्फैक्शन सवाल चुकी यम साथ वन यम इंसानस यम एक्सपेक्टेशंस आस यम साथ यम डिसीजन नु कि बस वन नेबर पड़ने यमस यम साथ मुख्तलिफ एक्सपेक्टेशंस आस के फलानी चीज मेल में आयत फिस्तानी चीज मेल में आयत तो यम साथ तम फुलफिल आसन गम जनरल मतलब इंसान है इंसान सैटिस्फाई आसन बट कमिंग टू द पॉइंट कि कत इंसानस तरन फिक्र की सैटिस्फैक्शन मेले मतलब यम साथ सोशल साइंस किन स्टूडेंटन यम जन बैचलर्स या यम जन मास्टर्स छ आसन करमच मे छु बासन कि सैटिस्फैक्शन छ एम चीज सित मिलान कि इंसानन कथन नेशनल सेमिनारन मज आस पार्टिसिपेट ड्यूरिंग बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री एमस कथन कल्चरल एजुकेशनल क्लबन सत एसोसिएशन एमस प्रोजेक्ट वर्क तगन कर रिसर्च प्रपोजल तगन बना या एम कजा किताब पे यम चीज दिवान एक्सपेक्टेड मतलब सैटिस्फैक्शन अकिस इंसानस. So both of you are saying that we are completely satisfied with our decision of going outside for education. One more stream session aspect, and I believe it is one of the most important sessions for us. Or tasha 5 minute, donwani 5 minute, 5 minutes each. तो even तो वैस त्रे टीम यम जन तो बासन छ कि advantages त्रे खास advantages यम जन हासिल छ गसन यम साथ इंसान outside छ गसन तालीम हासिल करने खातिर त्रेन पट के तो focus. You can obviously enumerate a lot of them, but 3 main advantages of going outside. Well, there could be as many as advantages as one could think of, and most important, I would like to enlist 3 important of them. One is the most important is what I call academic training. Mm-hmm. So you basically get an opportunity to be trained by excellent faculty members. Mm-hmm. So in my case, all my faculty members were they had their education abroad. So that actually offered me an opportunity without going abroad to be exposed to those ideas, to be exposed to those skills that they had. So moreover, apart from excellent faculty members, one more important is critical curriculum that is being taught in these universities. So Delhi University has excellent curriculum, advanced, very advanced, productive curriculum, and which is very important at the in the formative years, especially during honors. And at the master's level, it's even more important. And the more you are familiar with the critical literature in these formative years, the more it enhances the possibility of being a good researcher later. Because I've seen that many of our researchers keep clearing their concepts even during the PhDs. So which is how you benefit going into these universities or having an education in there. So that is the point. That is point number 1. Now point number 2 is academic exposure, which is I consider it the most important one. So if you are training as an academic,
ability to speak in the public, ability to articulate your ideas, ability to express your opinions in an academic, in the acceptable academic language is very important. And how do you learn these skills? Because I'll talk about my own experiences in Delhi University. So when you're done with the orientation program on the very first day, the next day you are allowed to join different kinds of forums. There are dancing societies, there are debating societies, cultural societies, so on and so forth. And at this point in time, you have an opportunity to polish your natural talents, or if you do not have a specific talent, but you can actually take off. You can actually begin forming a particular talent. So that is how these forums give you earlier exposure. Mm-hmm. So for example, participation in debating societies actually enhances your skills of articulating your ideas. Now, why I consider this as an important case. I have seen many PhD candidates, or rather those who have completed their PhDs. They're not able to teach. They're not able to. They're shy. They're not able to speak in front of the students, and or rather they're not able to articulate or crystallize their ideas, which is a problem. But I do not mean to be dismissive, saying that they can't do without that. But for an academic, it's very important. So that is how academic exposure is important. And in these universities, for example, as I keep saying, these universities actually give you that environment where you are exposed to different kinds of setups, different behaviors associated with personality development. So that is point number 2. Now, point number 3 is basically what I call academic opportunities. So obviously, if one would compare opportunities in Kashmir, in universities in Kashmir and universities outside, there's a marked difference. One important difference that I would like to sharpen out is going outside the state. This is a clarification which I would like to make. Going outside the state is not sufficient. One, if anybody wants to do or wants to pursue his education or her education outside the state, one has to make sure that the institution he or she joins is a good one. Otherwise, there's no difference at all. So there are very important universities that one can join. So in these universities, you will have ample of plenty of opportunities to take off, or rather join academic and non-academic programs abroad. So one can actually, in case of Delhi University, for instance, many of the successful Kashmiris have actually utilized Delhi University as an earlier program. For example, Basharat Peer, Wajahat, Aga Shahid Ali, and so on and so forth. They have actually had their earlier education at Delhi University. So in Delhi University, or rather JNU or AMU, Jamia, you are exposed to different, as I said, different ideas, information. So you can actually utilize that information to go abroad. For instance, many of my friends went to Oxford, Cambridge, some became civil servants. So I would say these are actually launching platforms. So that's what I want to say. Okay, thank you. Yam sathi zyada अंग्रेजी समझन के एजाज सब फरमावन के yam zan taite ustad I'm so sorry, I'm not comfortable in Kashmiri. No, it's okay. We are comfortable with it. With the साथ basically timsin two zyada hekan समझत के इससे तह खतर करो थोड़ा बहुत simplify. So that's so यशा सितकती जिम्मेदारी वैसे है एंकर यशा सितकती जिम्मेदारी के
trained ustad taiti tim cha variho asdaro pet asan amit tam se chung expert faculty yim sat asan ustad better asan sein khatra growth karing asan sahal doim cheez curriculum ch but challenging asan ish asan critical curriculum ishun so sad curriculum asan ki to tam se sohliyat gasan academic exposure ch tait melan tait ch mukhtalif cheezan mas participate karnu zabardast mauka melan environment ch challenge karan to hekyo groom tat mas gese different यानी कि क्लब्स वगैरह छ आसन यथन जन तै पन टैलेंट यम जन खटित छ आसन एक इंसान यम छ ब्रों कन यवन और फाइनली वन यमो के एकेडमिक अपॉर्चुनिटीज छ जबरदस्त तिकाज यम छ तिम प्लेटफॉर्म्स यथन जन येत पेट तोय वय फर्दर ब्रों कन हेक्यो गसे तो हेक्यो ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज या बड़न बड़न इदारन पेट मस यानी कि यमो इदारो पेट गसे यम छ लॉन्चिंग पैड्स एज सर्व करन बहरहाल यम छ बुनियादी के नुकात वन यमो के यम जन एडवांटेजेस एस मेलन छ यम साथ नेबर तालीम हासिल करो ऐसे मैं यह सवाल पृछो नेक्स्ट मेहमानस समीर सब तो वन तो क्या वैसे होता है एडवांटेजेस क्या तो मेन एडवांटेजेस यम साथ तो नेबर छ गसन क्या फायदा बह कर ज्यादा बात ये चूंकि बैचलर्स लेवल पे मास्टर्स लेवल तक चूंकि बह रिसर्चस मज आमुत कह तो सारे खोत बेहतरीन एडवांटेज यस बासे इन कंपैरिजन टू द कॉलेजेस ऑफ वैली कि नेबरिमन यूनिवर्सिटियन मज हदस तान बुक रीडिंग कल्चर डेवलप इस जन शायद ये यम जन कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स तिमन मज तम मेयारुक कह तो नेबरिमन यूनिवर्सिटियन मज एक्सपोजर टू द बुक्स गसान सह अम चीज सत चूंकि तत लाइब्रेरी ठीक ठाक ह्यूज अमाउंट्स ऑफ बुक्स मतलब मुख्तलिफ बुक्स अवेलेबल और इंटरनेट फैसिलिटी मान ऑलवेज अवेलेबल यूनिवर्सिटी हंद तरफ दोयम चीज दोयम जन एडवांटेज सह वन बह कि जन आउटसाइड यूनिवर्सिटीज दे बिकेम द लॉन्चिंग पैड फॉर सेटिंग अप हायर एजुकेशनल गोल्स मतलब अमुक वन मतलब कि अति मतलब वारा लक्चे मतलब बैचलर्स डिग्री पे या मास्टर्स डिग्री पे इंसान रिसर्च कर रुझान मिलान अमिस कम्पिटिटिव एग्जाम तिम तिहंद मुख्तलिफ चीज समझ अमिस मतलब यह IIT मज एडमिशन करने या अब्रॉड गमिस वारा लक्चे लेवल पे इन चीजन रुझान मिलान त्रेम इम्पॉर्टेंट एडवांटेज कि चूंकि यूनिवर्सिटी मज कल्चरल एजुकेशन क्लब्स इत जन मोहतरम एजाज सोबन तोन कि अकिस इंसान सज पर्सनलिटी ग्रूम तो पॉलिश कर कि जन स्टूडेंट पन कैपेबिलिटीन तो पन इंटरेस्टन मद नजर थी कमन कमन मतलब चीजन मज ब्रो कुन गज कल्चरल एजुकेशन इम्पॉर्टेंट चीज नेबरिमन यूनिवर्सिटी यम त्रे मुख्तसर important advantages वारिया असल जबरदस्त खुश तय वोन कि बुक रीडिंग इंपॉर्टेंट चीज जन डेवलप गसन अकिस तालिब इलमस मज यम साथ नेबर गसन ये तूत कल्चर बुक रीडिंग हुन कह इंपॉर्टेंट पॉइंट दोम वोनो तुह कि यम लॉन्चिंग पैड्स बनन पे लागन सोचन IAS KS फॉर एग्जांपल या रिसर्च कर सोचन या बदल एग्जाम या फॉरेन गसन सोचन और त्रेम वोनो तुह कि एजुकेशनल क्लब्स यम जन वारिया सहूलत पैदा करान या तरीक पैदा करान इंसानस ग्रो गसन तम सद पर्सनैलिटी पॉलिश कर बहरहाल वन फाइनल यह सोन कंपोनेंट फाइनल यह सवाल अमूमी दिलचस्पी खतर कि तुम वन तो कह खास वाक़ा यादगार रूदमुत और समझन कि यह यूनिक मैनी यूनिवर्सिटी सह नेबर गसन सत माहौल मिल मे शायद इफ आई वुड हैव बीन इन फॉर एग्जांपल जम्मू एंड कश्मीर और इन वैली the वाक़ा तो ऐसे तो share if you have something in your mind एजाज सब तय पे करूँ start के unique incident experience तो या जन यादगार तो हैं खतर और सब करन कि this is the thing which matters for me. Well, lots of these experiences, but I would like to share one of the experiences. So way back in 2014 or 2013, while I was doing my masters, I had an opportunity to represent Delhi University in one of the
exchange programs, which is called as Universitas 21 Intensive module, which is basically a cultural program, a cultural exchange of students and scholars and faculty members between 4 important universities. One is Delhi University, University of Yale, University of Melbourne, and University of Birmingham. So it's basically a cultural program where you're taught by global faculty, global faculties, those who are globally renowned, and you get to have an opportunity to interact with global scholars and scholars of these students of these universities. So this program ran for around 2 weeks, and I was so much fortunate to have availed that opportunity to work with those international students and faculty members, and that was very important in my case, because I got a glimpse of what global academia is all about, what kinds of standards global academia requires, and what sort of language it requires. And so I think that was one of the important experiences that I would have never imagined back in Kashmir. But at the same time, I'd like to clarify also that the situation is changing dramatically now in Kashmir, because I've been in Kashmir University for a couple of years now. When I joined Delhi University, it was 11 years back. Since then, I've seen significant changes coming in Kashmir, in universities in Kashmir, and this change can be seen actually, being in. I've taught in the university for some time, and in different colleges also. So change is coming, and more people are moving outside as well as abroad, and this change is not subtle. This is very much visible now. Lots of people are going outside, and they come up with great ideas. They become good teachers. So I'm very optimistic about the changes that are occurring, and that will occur in some time. Okay, thanks, Shukriya. Jas sabes farmaun ki iman melio ak program attend karnuk mokal 2013 mans और तथ मज आस 4 यूनिवर्सिटी आख दिल्ली यूनिवर्सिटी बेस नेबरिम 3 यूनिवर्सिटी और अत वुच यमो अलग अख माहौल युस जन यम जन यम वारिया मुतासिर कर यमन फिक्र तौर के academic environment क्युत गस आसन लेवल किस गस आसन interactions किस गसन आसने और engagements किस गसन आसने बहरहाल इश यमन बड़ यादगार रूदमुत अगर च वारिया टाइम यमन गोमुत छ यानी कि ये प्रोग्राम अटेंड करमेतिस मगर तम पत्ते still then he is hopeful के J&K मज तश कशीर मज तश खास तौर पर कश्मीर यूनिवर्सिटी मज तश माहौल दो बेहतर बनन and we are moving fast अम पत समीर साहब तुम वन तो पन क्या एक्सपीरियंस यन यादगार तुहंद खतर बनन चाहे सो लक्ट इंसिडेंट क्या actually यस बह पन यस इंसिडेंट तह ब्रोट कन बयान कर यह गो रिसेंटली तो असलन यह ताल्लुक थवन यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन चूंकि यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यूनिवर्सिटी हूँ कि अत मज वो कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन ऑफ द यूनिवर्सिटी सो गो इत कि वन ऑफ द फ्रेंड्स मतलब जूनियर तिम मेनिस हॉस्टलस मज रोजान रिसेंटली यम साथ तमिस मास्टर्स खतर यम साथ तिमो एंट्रेंस एग्जामिनेशन कोर क्वालिफाई पत तिमन मतलब काउंसलिंग विज डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने विज गो तिमन एरर चूंकि तिम मतलब विजुअली इम्पेयर्ड तिम हेकन अशो सत वुचित कह तो तिमो हेक न प्रॉपरली मतलब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करित कह तो यम साथ में लिस्ट द्राव यूनिवर्सिटी मज कोर कैंचो टीचरो मतलब अमिस नफरस फ्रेंडस कॉल दोपिस यम साथ चोन नाव छ लिस्टस मज कह यम साथ सु वापस गो तम कोर लॉग इन तम कुछ डैशबोर्ड्स पे तम पन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करमित कह और अम पत कोर वह रजू मतलब यह जन एडमिनिस्ट्रेशन मुख्तलिफ ऑफिसर्स या अमिस मिले एक्सेस टू द वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी तो वारा स्ट्रगल करने पत मिलो अमिस मतलब अल्टीमेटली एडमिशन
शायद येन यूनिवर्सिटियन मंज यम जन कशीर मंज यूनिवर्सिटी आसन एत यीचा ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी कि पत हेक एडमिनिस्ट्रेशन यूता बोड डिसीजन नित तो शायद मतलब नेबर यूनिवर्सिटियन मंज एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शनस मंज अम किस्म फ्लेक्सिबिलिटी अत यिवान समीर साहब वन कि एडमिनिस्ट्रेशन तमो कोर अख रूम क्रिएट अमिस कैंडिडेटस खतर अमिस गलती गमस अमि हेकुन पन डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर अगर स्ट्रिक्ट मेयार लगाव तो तेल हेकन तमिस एडमिशन गसित कह तम सुंद केस तेल फाइनल गोमुत ऑलरेडी मगर स्टिल यूनिवर्सिटी कोर बे एक लट अत गौर खोज और तमो न्यू डिसीजन कि वी हैव टू गिव हिम एडमिशन अम सुंद केस युस थ्रो कर तिकाज ऑलरेडी हैंडिकैप्ड अमिस कह प्रॉब्लम यह चैलेंजड फिजिकली चैलेंजड तो अम केस गोस थ्रो गसन तो यह समीर सबस बड़ याद रूदमुत कि एडमिनिस्ट्रेशनस मज गसन यम फ्लेक्सिबिलिटीज आसने ताकि वक्त विच अगर कह अनइंटेंडेड गलती गसन कंस तो तम गस अकोमोडेट यानी कि गसने बहरहाल प्रिस पन्न मेहमानन सारी 4 सवाल और बस उम्मीद कर कि नाजरीन तो बोजन ये और तुम करो पन्ने जाए फैसले कि वट शुड वी बी डूइंग अगर तुम वन लक्ष्य उम्र मज तुम फर्दर एजुकेशन गसन परस्यू कर तो मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव्स यम जन तुम ब्रोट कन आय त्रावन एवेलुएट कर हेकु तुम पन डिसीजन मे बासन वही ज्यादा बेहतर यानी कि नित और अत सत फोकस कर कि यम जन सन एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस तिमन पे मेहनत करने जरूरत ताकि तिम बन असली स्टैंडर्डिक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन बल्कि कोशिश कर कि सन एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस गसन ती स्ट्रांग आसन युस जन चूंकि ऑलरेडी खूबसूरत जाए और लुक पसंद कर योर युन तो यह गस अत एकेडमिक्स तालीम अट्रैक्शन बन यह असल रुझान पैदा करें बाकियन लुकन कि तुम ये अपॉर्चुनिटी तालीम बेहतर हासिल कर बहरहाल बहुत पन्न दोनवनी साथियन तुहद शुक्रिया अदा कर एजाज साहब तुहद समीर साहब तुहद ब्या साथी तिमन गो क्या टेक्निकल तम हेक कंटिन्यू कह तुहद शुक्रिया अदा कर बस उम्मीद कर कि इंशाल्लाह इन वालन प्रोग्रामन मज करो तुम पार्टिसिपेट एजुकेशनस रिलेटेड इशूज यम जन डिस्कस पजन कर यम जन आम लुकन तान पजन वातन और अस पजन थीम्स क्रिएट करें इशूज डिस्कस करें ताकि आम सामीन यम जन या स्टूडेंट कम्युनिटी तम करें यानी कि तिमन गस फायदे हासिल तो अक लट बे तुहद सड़ा शुक्रिया ये प्रोग्रामस मज पार्टिसिपेट कर और उम्मीद कर कि नेक्स्ट टाइम करो तुम बे पार्टिसिपेट तो फॉर्मली करो पन प्रोग्राम अमुक इख्तिताम